अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं हम cs403 की तैयारी कर रहे थे, तो 10 MCQ हमने कर लिए थे। तो आगे से हम लोग करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग DDL। ये पर वन ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग DDL का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसका कमांड्स उसको यूज करने की क्या वजह है, एक पर्पस बताएं उनमें से। इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इनटू डेटाबेस, नहीं वो हम लोग DML के जरिए करते हैं। रिकॉर्ड्स को इंसर्ट भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं और डेटाबेस को मैनिपुलेट भी करते हैं। DDL का काम क्या होता है? क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द डेटाबेस। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। DDL यहाँ पे सर्च करते हैं DDL, तो ये आप देखेंगे क्रिएटिंग तो होती थी है। यहाँ से देखते हैं DDL स्किल। मैं आपको दिखाता हूँ DDL का ये कमांड। ये देखिए आपने यहाँ पे लिखा हो, ये रहा, ये लाइन लिखी that DDL यानी Data Definition Language contains the commands used to create and destroy the database and database objects। ठीक है, तो ये इसका फिर हो गया कंफर्म। इसका ये है डी ऑप्शन, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग database। आगे 12 MCQ, the dash should be user friendly, data integrity must be ensured and checks can be applied within the tables। the dash should be user friendly, तो ये input forms compared computer language application program database, इसका input forms है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से input forms, ये input forms है इसका, ये यहाँ पे which are used in the development of application text can be applied with ये लिखा हुआ है following thing must be ensured for input forms forms should be user friendly, data integrity must be ensured, which means the database must represent the true picture of the real system, checks can be applied within the table definition or through input forms। और इसके नीचे हम लोग देखते हैं, हाँ यही है, ठीक है, ये इनपुट फॉर्म्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है MCQ नंबर 13। A memory cache sometimes called a cache store or cache RAM। ये इसका मेमोरी कैच समटाइम्स क्या कहते हैं, मेमोरी कैच हम लोग कहते हैं, समटाइम्स मेमोरी कैच इज कॉल्ड कैच स्टोर, ये फिर रैम। यहाँ पे देखते हैं मेमोरी मेमोरी कैच लिखो है, मेमोरी कैच लिखो, कैश कैश कैश, तो ये यहाँ ये लिखा मेमोरी कैच समटाइम्स कॉल्ड अ कैच स्टोर और रैम। ये कैच इज पोर्शन ऑफ, ये तो इसका हो गया रैम। उसके बाद MCQ नंबर 14। अकॉर्डिंग टू हिज और हर लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर आर देयर, तो ये 3 टाइप के यूजर हैं, ठीक है, यानी ये पहला ऑप्शन है इसका 3। एक होता है बिगिनर, अब देखते हैं, मैं देखता हूँ बिगिनर, ठीक है, वैसे एक्सपर्ट लिखते हैं, देखिए एक्सपर्ट्स। उसके बाद इंटरमीडिएट, सबसे पहले आता है बिगिनर। ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट्स 3 लेवल होते हैं मतलब यूजर्स के, इसका ए ऑप्शन छोड़ने का। आगे 15 MCQ DML, डाटा मैनिपुलेशन। DML का मतलब स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डज नॉट यूज टू, किसके लिए नहीं इस्तेमाल की, ऐड न्यू रोज टू टेबल्स,
ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। ऐड रोज को ऐड करने के लिए भी और रिट्राइव करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टैब मॉडिफाई द रोज ऑफ टेबल हु यूज डीएमएल डज नॉट यूज टू, किसके लिए नहीं होती, अल्टर अ टेबल डेफिनेशन, इसके लिए हम डीएमएल नहीं डीडीएल इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ मैं आपको कन्फर्म भी करवा देता हूँ, डी डी नहीं डीएमएल डीएमएल दे दें कौन है। देखिए the DML component of SQL comprises of the following basic statements. Insert to add the new rows to table, select to retrieve the rows, update to modify the rows of the table। ये इन तीन कामों के लिए हम लोग DML का इस्तेमाल करते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, आफ्टर अल्टर टेबल डेफिनेशन, इसके लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following prevents the duplicate value to be displayed as a result of an SQL statement? Which prevent the duplicate values to be displayed? Prevents duplicate values, क्या लिखा हुआ है, prevents duplicate values now the first thing is the table ये देखें यहाँ पर लिखो the keyword distinct limits the output to so that you do not see distinct value in the values in a column incoming like we will see further। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हम लगाते हैं ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज में शो हो। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डुप्लीकेट वैल्यू इवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड एज रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रू है। आगे है ग्रांट बिलोंग टू व्हिच टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड क्लासिफिकेशन, डीएमएल डीडीएल या डीसीएल। डाटा डीसीएल ग्रांट जो है वो डीसीएल का कमांड है। डीसीएल का मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसके अंदर दो कमांड आते हैं, एक ग्रांट आता है और एक रिवोक। ग्रांट का मतलब अपनी परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन छीन लेना, ऐसा चीज है। डीसीएल में आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पे डीसीएल यहाँ पे ये है डीसीएल। ठीक है, ये डीडीएल आ गया कमांड के बाद है ये डीसीएल डाटा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये कंट्रोल last here we have to discuss two major components of access control that are also considered as a part of the data control।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 डैश यूजर इंटरफेस इज preferred over dash user interface with respect to user. Dash user interface is preferred. Easy to understand user interface is preferred over effective user interface with respect to user. Easy to understand user interface is preferred. यहाँ पे चेक करते हैं user interface you will do 329. In the mind of users, the system user interface is the system can everything else. The design of the user interface is critical to the success of or failure of project. Get it right and your users will forgive the emotionally infelicity in implementation. Get it wrong and it would not really matter how efficient your code is. The irony here is that if you do not do get it, you try it hardly anyone will notice. Really elegant interfaces are invisible. Even if you get it wrong, no one might notice. The interface of many computer systems, particularly database systems, are so awkward that your system will be just one more of medical multi invasive computer systems people have come to expect. Effective interfaces can also require more work to implement, although this is not necessarily the case. In addition, the offs can be huge and they are not all of the which is its own reward variety. An effective user interface minimizes the time user requires to learn and implement the system. Once the system is implemented, productivity gains and are higher if user do not have to struggle to blend it to their will. Chances are good that both of these issues were addressed in the project goals. They certainly impact the infamous bottom line. Effective interfaces that closely matches the user expectations and work processes also minimizes the need for external documentation, which is also expensive. And while user might not consciously notice how wonderful your user interface is, they will certainly notice that your system seems to just work better. So what constitutes an effective interface? To my mind, it's the one that helps users accomplish that their tasks and otherwise gets out of the way. An effective interface does not impose its requirements on users. It never forces users to play by its rules. It plays by the user's rules. An effective interface does not force users to learn a bunch of uninteresting stuff just to use it. And finally, it does not behave in unexpected ways. Following are the two types of user interfaces: text-based
graphical user interface GUI, most commonly called as forms. GUI graphical user interface को हम लोग forms भी कहते हैं. text based user interface के अंदर क्या सीन होता है? In text based user interface certain keyboard numbers are designed for any actions, but it is used very rarely nowadays. ये हम लोग text based user interface है, इसको हम लोग बटनों वाले मोबाइलों के अंदर देखते हैं. ठीक है, एक बटन मतलब जिसमें हम लोग नहीं कर देखो, जब हमें बैलेंस चेक करना हो तो कोड मिलाना पड़ता है, वहाँ यस नो वो काफ़ी नंबर चोर काम होता है, उसमें हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वो सारा जो है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है. एडिंग अ रिकॉर्ड 1, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड 2, एनरोलमेंट 3, रिजल्ट कैलकुलेशन 4, एग्जिट 5. ये एक मेन्यू दिए उसके सामने बटन रखे होंगे, अगर एक दबाओगे तो ये होगा, दो दबाओगे तो ये होगा. ठीक है. Forms यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिसे हम कहते हैं. GUI graphical user interface to forms is there. Forms are nowadays used extensively in the application programs. Following are the different types of forms. Forms की different types में से कुछ ही हैं. Browser based, there are web based forms. Browser based जो होते हैं वो web based forms, they are developed in HTML, scripting language और front page. तीन लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फ्रंट पेज में लिखी जाती है, HTML में लिखी जाती है. उसके बाद आता है नॉन ब्राउज़र और सिंपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नॉन ब्राउज़र या सिंपल GUI या फॉर्म्स. Two definitions of user friendly that are often modified or that are often mooted are easy to learn and easy to use. If we put aside for the moment the question of what actually easy means, we still have to ask ourselves, easy for whom? किसके लिए आसान? The system that is easy for a beginner to learn is not necessarily easy for an expert. The system The system that is easy for a beginner to learn is not necessarily easy for an expert to use. जो एक बिगिनर के लिए समझना आसान है वो एक्सपर्ट के लिए इतनी आसान नहीं हो सकता. Your best approach is to consider the needs of each level of user. आपकी जो approach होनी चाहिए उस तरह होनी चाहिए कि best approach. Your best approach is to consider the need of every level of user. हर level of user को आप include करेंगे जो approach उसके अंदर. Accommodate each with different facets of the interface. Following are the different kinds of users. Users कितनी किस्म के बताएंगे? Beginner, intermediate और तीसरा जो होता है expert. अब beginner क्या करता है? Beginners के बारे में पता है. Beginners कौन होते हैं? Everyone is a beginner at some point. हर कोई जो है वो कहता है beginner है एक हाथ पे जाके. Very few people remain that way. अक्सर लोग ये beginner ही जाते हैं. That will either pass through the stage to intermediate. कुछ लोग पास कर जाते हैं intermediate पे, or they will discard your system entirely in favor of someone else. या फिर वो आपके सिस्टम को छोड़ जाते हैं किसी रीजन की वजह से. For this reason, इसी वजह से you must be careful not to build in support for beginners that will get in the way of more advanced users. You must be careful not to build in support for beginners that will get in the way of more advanced users. आपने बिगिनर्स को इस तरह से डिज़ाइन भी नहीं कि वो एडवांस की तरफ जाएं. Beginners need to know what your system does before they start to learn how to use it. आप बिगिनर्स को पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम करता है क्या, इससे पहले वो उसको सीखें कि हम इसको किस तरह चलाना है. Best way to present this information is outside the main system itself. For a simple system, an introductory dialog box that describes the system can be sufficient. Just be sure you always include a means of dismissing the dialog box permanently. For more complex systems, a guided tour might be more appropriate. Online help is not a good option for beginners. They might not know it exists, or if they do, how to use it. कहते हैं ऑनलाइन तरीक़ेकार नहीं बिजनेस के लिए उनको गाइड कीजिए ऑनलाइन के इस तरह कुछ. अब उनको क्या पता है वो नहीं. I have had some success using an online user's guide. However, by including a link to it from the introductory dialog box and from the help menu to be accessible with beginners, these guides must be task-oriented. Beginners who do not want to know what menu item means. They want to know how to create an invoice. Intermediate students. For most systems, the majority of users fall into the intermediate category. Intermediate users know that what the system does. उनको पता होता है system क्या करता है.
बट दे ऑफ्टन फॉरगेट द डिटेल्स ऑफ द हाउ। इनको ये पता नहीं होता कैसे करता है। दिस इज द ग्रुप यू मस्ट सपोर्ट डायरेक्टली इन द यूजर इंटरफेस। इनको आपने डायरेक्टली असेस करना है, सपोर्ट करना है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटरफेस प्रोवाइड अ लॉट ऑफ टूल्स फॉर हेल्पिंग दीज यूजर्स। माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वेल डिजाइन मेन्यू सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर रिमाइंडिंग इंटरमीडिएट यूजर्स ऑफ द सिस्टम कैपेबिलिटीज। जो कहता है डिजाइन मेन्यू सिस्टम वो डिजाइन कर रहे थे ना, वो बेस्ट टूल होता है कि इंटरमीडिएट यूजर्स को रिमाइंड करवाने के लिए सिस्टम कैपेबिलिटीज क्या क्या कर सकता है। A quick scan of the available menu item will immediately remind them of the function available and at the same time allow them to initiate appropriate tasks। वो उनको ना सिर्फ बताते ये हो सकता है, और वो उन जो मेन्यू सामने आ रहा है उसकी सभी चीज़ें कर भी सकते हैं। एन एक्सीलेंट सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर इंटरमीडिएट यूजर इज ऑनलाइन हेल्प। इन इंटरमीडिएट यूजर्स को ऑनलाइन सपोर्ट भी देनी चाहिए। राइटिंग ऑनलाइन हेल्प इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस बुक। In this context, however, I will mention that most intermediate users will use the index as their primary access mechanism. The index should therefore be as completed as you can possibly make it। अगर आपको लगता है आप टाइम जाए तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। ये मैं उनके लिए पार्ट हूँ जो चाहते हैं साथ साथ डिटेल में कवर किया जाए। Experts users know what to do and how to do it. They are primarily interested in doing things quickly. The more shortcut you can build in your system, the happier you will make this group of users. In my experience, experts users tend to be keyboard oriented too, so make sure that you provide a way to move around the system using the keyboard. If you are category to this group expert user, वो कहते हैं एक्सपर्ट वाले वो होते हैं जो कीबोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि शॉर्ट कीज का उनको बताएं, उनकी शॉर्ट कीज की तो उनको वो एक बटन दबा के पूरे पूरे सिस्टम के अंदर ही जहाँ मर्जी जा सकें। Expert users also appreciate the ability to customize their working environment. Providing this functionality can be an expensive exercise, however, so you will want to carefully evaluate the benefit before including it. If you do decide to include some level of interface customization, even if it's only a matter of arranging windows on the screen, be certain to maintain the changes between sessions. Nothing is then irritating and having to rearrange everything every time you load a program. Tips for user-friendly interface. चलें वापस आते हैं चूज़ की तरफ। सो इसका जो है 18वीं का वो सी ऑप्शन, इजी टू अंडरस्टैंड यूजर इंटरफेस इज प्रेफर्ड ओवर द इफेक्टिव यूजर इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू यूजर। यूजर के लिहाज से इजी जो आसानी से समझा जाएगा वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एज कम्पेयर टू इफेक्टिव जो ज़्यादा बेहतर काम करे। क्यों? अब आप देखिए एक गाड़ी जो आसानी से चलती है, जैसे ना ऑटो जो गाड़ियाँ आजकल वो ईजिली चलती हैं, जबकि जो मैनुअल में ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात जो नया यूज़र है वो तो उसको ही प्रेफर करेगा जो आसान हो सीखने में। ठीक है, तो इस करके इसका सी ऑप्शन बनता है। 19 एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के रिगार्डिंग कहता है क्या ट्रू नहीं है, पहले हम देखें इज नॉट ट्रू क्या क्या ट्रू है, क्लस्टरिंग होता क्या है। ठीक है, क्लस्टरिंग CLUS क्लस्टरिंग प्लस सो ये क्लस्टरिंग फाइल्स। ठीक, क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस, वो कहता है क्लस्टरिंग एक अमल है विच मीन्स टू प्लेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स टू प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन से हम लोग फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स रिकॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट टेबल से हम लोग रिकॉर्ड उठाते हैं, यानी डाटा उठाते हैं, प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन, तक कि किसी ऐसी जगह पर रखा जा सके जहाँ पे फिजिकल लोकेशन वो आपस में जुड़े हों, कॉल क्लस्टर्स। टू प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन, एडजेसेंट मतलब साथ साथ फिजिकल लोकेशन, ऐसी फिजिकल लोकेशन रखा जाए जहाँ पर साथ साथ पड़े डाटा पड़ा हो, जो क्लस्टर्स कहती हैं। ठीक है, इट क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस, वो बता दिए। वो एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन पे जब वो डाटा हम लोग इकट्ठा रिकॉर्ड्स इकट्ठा करके उस रिकॉर्ड को क्लस्टर कहती हैं और इस प्रोसेस को क्लस्टरिंग कहती है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी सिंस रिलेटेड दैट रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड टू ईच अदर। कहते हैं ये एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं कि जब देखो अब हमें मिसाल के तौर पे एक बंदे का रिकॉर्ड चाहिए, उसके पूरे घर वालों को रिकॉर्ड्स के साथ ही पड़े तो ईजी नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम बार बार जाके फैच नहीं करना पड़ेगा डाटा। अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सारा डाटा तो पड़ा हुआ है, अब मुझे स्टूडेंट का फादर नेम चाहिए। अब स्टूडेंट के फादर नेम पे मुझे दोबारा से टेबल में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसके फादर नेम की डिटेल्स साथ वाले एडजेसेंट
लोकेशन पे पड़ी हुई तो वहाँ से हम लोग फैच कर लेंगे। क्लस्टरिंग इज आल्सो सूटेबल टू रिलेटिवली स्टैटिक सिचुएशंस, तो ये एमसीक्यूज भी मिलता है। क्लस्टरिंग इज आर सूटेबल टू रिलेटिवली डैश सिचुएशंस, स्टैटिक सिचुएशंस, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ क्लस्टरिंग इज दैट द वाइल असेसिंग द रिकॉर्ड इट इज इजी टू असेस, कि इसको इजी, ये हमें इजी कर देता है असेस करना। फाइंड क्लस्टर, define the key of the cluster and include the table into the cluster while creating associating the key with it। सही हो गया। तो ये हम लोग देखते हैं अब इस एमसीक्यू को। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी सिंस रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड टू क्लोज टू ईच अदर, ट्रू हो गया ये, ठीक है। क्लस्टरिंग मेक्स रिकॉर्ड डिफिकल्ट टू असेस, ये गलत है, उसने गलत पूछा, तो ये गलत, इनमें से कौन सा, ये गलत है, बी ऑप्शन। suitable to relate, ये relatively static situations, ये भी सही है। It is a process which means to place a record from different tables to place in, it is a process which means to place records from different tables to place adjacent physical locations, ठीक है। आगे MCQ नंबर 20, the dash condition allows to retrieve values within a specific range, तो ये कौन करता है, ये वो कह रहे हैं बिटवीन करता है, तो ये कंफर्म कर लेते हैं कि बिटवीन करता है, ये नहीं। इसने क्या पूछा हुआ है, condition allows to values within range, values within the values with in क्या लिखो, allows values within a specific range, yeah, the between condition allows you to retrieve values within a specific range, तो ये between ये कंफर्म हो गया। 20 आगे किसमें की तरफ चलें, WORM, RAM stands for WORM stand for ROM stand for write once read many, आप देखते हैं WORM WORM, ये WORM stand for ये write once read many, WORM disk can be written on once and then read any number of times, however we need a special WORM disk drive to write data on a ROM disk। वो कह रहे WORM उसे कहते हैं ऐसी डिस्क जिसपे हम लोग एक दफ़ा लिखते हैं उसके बाद में बस वीडियो सीखती है। इसमें मिसाल ऐसे कि वो सीरीज में जो उनके अंदर एक दफ़ा डाटा लिखती भी जाता है, फिर उसको बार बार यूज़ की जाता है, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये WORM एग्जाम्पल है, तो इसका भी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। अगर 22 आता है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज टू यूज स्पेसिफाई डाटाबेस स्कीमों को स्पेसिफाई करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो वो DDL करते हैं। ये कंफर्म करवा देते हैं आपको, DDL देखते हैं। DDL ये डाटा डेफिनेशन, ये लिखा हुआ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्किल्स ट्रांसलेट द फिजिकल डिज़ाइन को एक्चुअल डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। आर्म विद द इंफॉर्मेशन, अच्छा ये DDL होता है कि ये पता चल गया आपको यहाँ से DDL की। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे command along with the different example, we also different strain of the create command in the queue study elder and SQL command with the example, we should study median we study the create, ये इसके अंदर DDL के बारे में सारा कुछ, ये रहा, ठीक है। DDL it deals with the structure of the database, स्ट्रक्चर का मतलब है उस जो होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग आम ज़बान में स्कीमा कहते हैं, यानी डेटाबेस डिज़ाइन। deal with the structure of database, the DDL allows specification of not only a set of relations but also the following information for each relation, schema for each relation, और schema का मतलब है कि तरतीब किस ऑर्डर में पड़े हैं, स्ट्रक्चर डेटाबेस का। schema for each relation, domain of values associated with each attribute, integrity constraint, the set of indices for each relation, security and authorization information, physical storage structure on disk, तो इसका जो बनता है वो DDL भी बनता है। आगे 23, एट विच डिज़ाइन लेवल डीनॉर्मलाइजेशन विल टेक प्लेस, कह रहा है एट विच डिज़ाइन लेवल, डिज़ाइन किस लेवल पे डीनॉर्मलाइजेशन होती है, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। डीनॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन
normalization, denormalization. Physical assets such as column or buffer data size denomination are so on. Physical records and denormalization. Denormalization is a technique to move from higher to a lower normal form of database modeling in order to speed up the database size. Denormalization process is applied for driving a physical data model from a logical form फिजिकल डाटा मॉडल निकालने के लिए लॉजिकल फॉर्म से फिजिकल डाटा मॉडल निकालने के लिए हम डिनॉर्मलाइज in logical database design we group things logically related for the same primary key. In physical database design keys are grouped as they are stored physically and accessed by the database management system. In general, it may decompose one logical relation into separate physical records, combine some or do both. This is a valid reason for denormalization that is to enhance the performance. However, there are several indicators which will help to identify the system and tables which are potential denormalization candidates. These are many critical to the at which level denormalization will take place. Conceptual design, logical design, all of the above. मेरे ख्याल से लॉजिकल डिजाइन होता है इसका ये लॉजिकल को डिजाइन को हमने फिजिकल के अंदर ले जाना होता है डिनोमिनेशन सिचुएशन 188 को चेक कर लेते हैं हम 188 ये entity types into one to relation of which non-legislative can fail to provide adequate system response time due to expensive situation and merge two entity types into one with one-to-one relationship. Even if one of the entity type is not to means can lead to wastage of storage. However, if two assets together very frequently, their merging might be a wise decision. So these two relations must be merged for better performance. Which have to denormalization situation to many relationship map to three relationship. So इसका चेक कर लेते हैं इसको जहाँ तक मेरा ख्याल है वो फिर बनता है लॉजिकल ये लॉजिकल को हम लोग फिजिकल में ले जाते हैं फिजिकल को हम ले जाते हैं रिलेशन में हम तो 100%. So the correct answer would be logical design or physical design. तो लॉजिकल इसका बनता है सही है फिजिकल नहीं मतलब लॉजिकल बनता है ये आगे the dash keyword is used in select statement to return the different values के लिए हमने हाँ ये हमने पीछे भी देखा था कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम इस तरह की यूज करते हैं ताकि डिफरेंट वैल्यूज आए हमारे पास ना कि सेम आए return different values keyword is used select statement to return different values यहाँ पे देख लेते हैं वो आगे चलते हैं इसका डिस्टिंक्ट कीवर्ड ये कंफर्म हो गया it should be user friendly and user must not search for required buttons or text boxes. This statement is about user friendly interface ठीक होगा
अच्छा, which of the following classes allows to sort the record in result set? Classes allow to sort the record, ये sort मतलब तरतीब देना in result set. रिजल्ट सेट के अंदर यानी कि जो रिजल्ट टेबल होता है उसके अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो सॉर्ट होकर आता है कौन सी क्लास की वजह से, वर्ड की वजह से, फाउंड की वजह से, हैविंग की वजह से, ये ऑर्डर बाय होता है, वर्ड की वजह से नहीं आता, फाउंड की हैविंग की वजह से नहीं आता, ये आता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बाय की वजह से। यहाँ पे आपसे हाँ ऑर्डर बाय ये इसका ठीक है, यहाँ से भी कन्फर्म करवा देता है नोट से ऑर्डर बाय प्लीज। ये ऑर्डर बाय क्लास यू टू स्टोर द रिकॉर्ड विद इन योर रिजल्ट सेट, ठीक है। तो ये data manipulation language is a set of commands used to maintain or query and maintain uh, used to maintain and query a database, including updating set of commands used to maintain and query a database, including updating, insertion and modifying and retrieving data. True. सही था वो definition है ये मतलब ये हमें याद कर लेंगे यार। The dash function helps reduces the need to use multiple or conditions। क्या मल्टीपल और जो है रिड्यूस द नीड टू यूज मल्टीपल और कंडीशन कौन करता है, विच फंक्शन साइज, कौन सा फंक्शन जो रिड्यूस करता है मल्टीपल और कंडीशन यूज करने। तो ये देखते हैं आप यहाँ पे रिड्यूस यूज यूज मल्टीपल था डाटा यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं है। अच्छा, correct statement for creating table in Microsoft SQL Server is create table customer, create टेबल नहीं आ जाता, कस्टमर है यहाँ पे, उसके बाद है SID create टेबल कस्टमर SID, ठीक है। कौन है SID ये ऑप्शन इसका राइट हो, ये टेबल कस्टमर SID से लेकर 30 तक
SID integer, primary key, common, last name, HR, अच्छा आगे which of the following is not DML command? Select, update, delete, truncate. DML के अंदर modify, update का भी होता है retrieve, update, select, DML command नहीं है. DML command होता है इसके पास. यहाँ पे insert, select, update, insert is not, insert, select, update, insert, truncate into the delete. In SQL, which command is used to delete rows from the table? रोज को delete command इस्तेमाल करते हैं हम. User knows what to do and how to do it are called experts. User know what to do and how to do it are called experts. User जिनको पता है क्या करना कैसे करेंगे. मेरा डैश टाइप यूजर इंटरफेस ये होता है टेक्स्ट बेस यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को फोन मेरा डैश टाइप यूजर नहीं तो वो ग्राफिकल इंटरफेस 30 DML stands for data manipulation language. 35 column used to identify and to uniquely identify individual rows of a given table. Columns used to uniquely identify individual row of a given table may be specified to be null, may be specified to be not null. इसका मुझे नहीं पता कल के फिर देखना कंफर्म करते हैं तो स्टेटमेंट टेस्ट किया column used to uniquely identify the individual of a given table commonly known as primary key may indeed be specified as not null. This constraint ensures that the values in these columns are not null, thus ensuring uniqueness and integrity of the data. So it is 36. Which of the following syntax of the function which of the following syntax of function in SQL is used to add column values? column values कॉलम के अंदर वैल्यूज ऐड करने के लिए हैं. काउंट एक्सप्रेशन मैक्स एक्सप्रेशन ऐड कॉलम. सम ब्रैकेट बंद एक्सप्रेशन function. Syntax of the function in SQL that is used to add column values. Sum expression. अच्छा आगे SQL 37. SQL is used for SQL किस लिए होती है इस्तेमाल फिर देख लेते हैं यहाँ से. ये रखा यहाँ पे SQL structured query. SQL stands for structured query language is an ANSI standard computer language for accessing and manipulating database. SQL is standardized and the current version is referred to as SQL 92. Any SQL compliant database should conform to the standards of SQL at the time. If not, they should state which flavor of SQL 89 for example, so that we can quickly figure out which features are not available. The standardization of SQL makes
so so that you can quickly figure out what features are not available. This standardization actually makes it an excellent tool for in website designs. Most web application development toolkits, and most notably at Rails Code, Fusion, and Microsoft Visual Interdev. Visual Interdev SQL like statements to connect to and extract information from database at creating, managing, deleting data tables, and managing the relationship among the stored data. In SQL, benefits of standard SQL. The major benefit of SQL application portability, application availability, reduce the dependency on a single vendor for system communication. It will be used for any type of interaction within database. Through database, and it can be used for creating table insertion in the table and deletion, as well as Google and other applications also. Through creating, managing, and deleting tables and merging the relationship among the stored data, generating queries, organizing, managing, and retrieving data stored in the database, maintaining data integrity, and coordinating data sharing. All of that are actually which of the following functions falls in the category of aggregate functions. कौन सी फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन में आती हैं? सम, मिनिमम और मैक्सिमम सारे ही आते हैं. चेक कर लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन आते हैं. एग्रीगेट फंक्शन aggregate functions. ये रहा है. These functions operate on a set of rows and return a single value. कह रहे ये फंक्शन जो है वो इसके सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. रोज वैल्यू हम देते हैं यूज अमंग मैनी अदर एक्सप्रेशन. Use among many other expressions in the item list of a select statement. Use among many other expressions अगर के दरमियान among के दरमियान यूज किया many other expressions in the item list of a select statement की item list में different expression को यूज किया. The select statement select must have a group by class. तो उसके अंदर group by class डालनी चाहिए. No group by class is required if the aggregate function is the only value retrieved by the select statement. अगर तो aggregate function is the only value retrieved by the select statement. select statement retrieve निकाल रही है वो खाली. अगर कि फंक्शन यानी एग्रीगेट फंक्शन ही है खाली तो फिर उसकी ये ग्रुप बाय क्लास नहीं यूज करती है. तो फॉलोइंग आर सम ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस. एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं एग्रीगेट फंक्शंस? फॉलोइंग आर द एग्रीगेट फंक्शन और उनके सारे यूज लिखे हुए हैं. सम में सबसे पहले एवरेज AVG expression compute average value of a column by the expression. Computes average value of a column by the expression. Count expression counts the row defined by the expression. Count star static counts all rows in a specified table or view. Min expression finds the minimum value in a column by the expression. Max finds the maximum value in a column by the expression. Sum computes the sum of column values by the expression. Select AVG CGPA as average CGPA, maximum CGPA as maximum CGPA from student. ठीक हो गया. तो इसका सम भी है, मिक्स भी है, तमाम आ जाते हैं इसके अंदर. एग्रीगेट फंक्शन वो होते हैं कि जो स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल किए गए. ये यहाँ पर भी पढ़ा था मुझे में create a set of rows and return single value. वो कह रहे कि
Aggregate functions are those functions that operate on the set of rows and return a single value. बस ये थी definition इसकी. Revoke is a dash statement. DCL, data control access. D, data definition, data control access, data manipulation, data description. तो ये data control access में DCL, DCA कह लो या DCL कह लो. data control language या data control access दोनों ही सही हैं. ये वो है स्टेटमेंट है. SQL stand for structured query language. पहला structured query language, ठीक है, only one. पहला what happen if the where class is omitted from the release statement. पहली where class is from the release from the release statement. Another statement. Release statement. So these all records from the table are deleted. General reasoning for horizontal or vertical partitioning is increasing the consistency, increasing the query purpose time, response time, and small tables are more efficient to process as compared to the larger tables. तो ये और पार्टीशनिंग करते क्यों हैं हम लोग? पार्टीशनिंग होता क्या है, करते क्यों हैं? Partitioning. In the previous lecture we have studied different data types and the coding techniques we now on implementing our physical records on the moments. Partitioning. In previous lecture we have studied different data types and the coding techniques.
partition denormalization used to merge different relations where partitions split same relation into two. Yeah, the general aim of data partitioning and placement in database are three. तीन काम करते हैं. Reduce the workload, data access, communication cost and size space. Number two, base workload, speed up the rate of useful work. दो काम लाजमी हैं. तो ये लिखें इंक्रीज एंड कंसिस्टेंसी, डिक्रीजिंग रिस्पॉन्स टाइम, स्मॉलर टेबल. तो ये ठीक लगा वर्ड, इसका बी ऑप्शन ही बनता है. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, वी शुड नॉट कंप्रोमाइज डैश ओवर एफिशिएंसी. कंसिस्टेंसी, नॉर्मलाइजेशन, क्यूरी, रिस्पॉन्स टाइप. हम एफिशिएंसी के लिए हम कंसिस्टेंसी, नॉर्मलाइजेशन, क्यूरी, रिस्पॉन्स टाइम के एफिशिएंसी के लिए हम इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. ठीक है, बी ऑप्शन राइट. यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, which language is used to permit or prohibit access to table. परमिट यानी ज़्यादा देना और प्रोहिबिट छीन लेना. ये DDL काम नहीं है, DML का भी काम नहीं है, DCL काम है. डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ये सीन होता है कि इजाज़त दी भी जाती है, ली भी जाती है. DDL यानी कि ए ऑप्शन है. DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. ग्रांट असेस परमिट असेस टू टेबल के लिए हम लोग ग्रांट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं. प्रोहिबिट के लिए हम लोग रिवोक इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is the correct way of selecting all the columns from a table called persons. Select star from person. तो ये बी ऑप्शन इसका सही है. PERSONS. सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट के बाद स्टार आना ठीक है पहली बार. बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट ठीक है इसके. 46, which of the following is used to retrieve and insert information from database. Used to retrieve and insert. कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं रिट्राइव और इंसर्ट करने की इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को निकालने या उसमें डालने के लिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं DML का. 47, which of the following statement creates a database name IMDb. क्या लिखा हुआ है? which of the following statement creates a database name IMDb. create database IMDb पहले ऑप्शन है इसका create database. 48, which of the following is not a part of an insert statement. insert statement का पार्ट कौन सा नहीं है? into value insert into भी है, value भी है और insert भी है, modify नहीं है. यहाँ मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ. insert statement state STATEMENT statement. देखिए इनटू भी इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, इनटू तो इस्तेमाल होता है. वैल्यू यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट इनटू और वैल्यू तीनों हैं आए हुए हैं. तो ये मॉडिफाई का लफ्ज़ जो है वो इंसर्ट स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. नॉट अ पार्ट ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट. मॉडिफाई. 49, objective of an order by class is to display or arrange output of a select statement in a particular order. Objective of order by class is to display or arrange output of a select statement in a particular order. तो ये ऑर्डर बाय क्लास काम यही है कि ऑर्डर के अंदर
देखो ना, consider a table name EMP employee having fields name having fields, एक टेबल है जिसका नाम है EMP यानी एम्प्लॉय, हैविंग फील्ड जिसके अंदर कॉलम्स हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एज, सैलरी, which of the following is true, the following escape statement tries to execute, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, सिलेक्ट कहते हैं तमाम की तमाम को सिलेक्ट कर लो फ्रॉम ईएमपी से, ऑल फ्रॉम ईएमपी जो है वो हमारे पास एक फील्ड है यानी कि एक कॉलम है, उस पूरी पूरी कॉलम को सिलेक्ट करो। कहता है वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अली, जहाँ पे एम्प्लॉय नेम अली हो, ऑर्डर बाय एज मतलब अली के नाम से, द स्टेटमेंट हैज syntax error, the statement displays the entering field from the employee in which the employee name is Ali, 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 Ali in ascending order of their age। जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो स्टेटमेंट डिस्प्लेज एंटर फील्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय नेम इज अली। The statement should be the statement displays the entire field from the employee in which the employee is in an order. There is a syntax error in the statement provided. Order by should be written as order by with the space in the order and by. Once corrected, the statement will execute properly, but it will not specify the order or the result set explicitly. The order of the rows could be in an order. Statement has an syntax error. Order और by दरमियान स्पेस आना। तो ये थी आज की 50 MCQ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।